Has the other panelist also have joined? Yeah, Advocate Tanvi, she has also joined, I guess. Okay. Just let's. So, ma'am, are you there? Yeah, hi, this is Pallavi. Hi. So, shall we start, Shruti? I think it's 11 o'clock. Sure, please, ma'am, go ahead. Because already I think they need a lot of time. So whatever we can save on. So Right. Yeah. Right. So, welcome. I, on behalf of ILM University and specifically on behalf of School of Law, welcome you, Advocate Gurkaran Singh and Advocate Tanvi Sharma. Heartily welcome to the webinar. And I hope, and rather than I would say that I'm sure that with this webinar, our students are going to get a very insightful knowledge about the ADR and mediation. So first, I would like to invite Advocate Tanvi Sharma and Advocate Gurkaran Singh to start with the webinar. Over to you, sir. Yes, hello. Hello, everyone. I hope you all are doing well in these times. Am I audible? Yeah, perfectly. You are audible and you are visible. We can see your screen as well. You can see my, okay, you can see the PPT. The PPT is visible, right? Yeah. Okay, perfect. Okay, good morning, everyone. I hope all of you are doing well in these times. Thank you for having us here, and we hope that it proves to be an enlightened session for all of you. So the topic for today's session is decoding mediation in India. Before we start with the session, let me give you a brief overview of the topics that we shall be covering. We shall start with a brief introduction to mediation. After that, we shall discuss the AFCON's judgment. After that, we shall discuss how mediation has been incorporated into the Indian legal system. After that, we'll start with the challenges which are being faced by the mediation, the need for a codified law on mediation, and we'll conclude by giving few suggestions from our side. Okay, so in the recent years, all of us have witnessed that there is a growing inclination towards ADR, that people are preferring ADR over litigation. The reason is that litigation does not appeal very appealing to people anymore. As of May 2021, there are almost 4 crore 44 lakh pending cases in the Indian courts. In such circumstances, whenever any issue arises, a person has to rethink before opting for litigation. And due to these reasons, they are moving more towards litigation because of the time and the money expenses involved in litigation. They are moving more towards ADR. And mediation is one of the most common modes of ADR, which is recognized not only in India, but also internationally. So what exactly is mediation? Mediation is not a very difficult term. In simple words, mediation is nothing but a process through which a neutral party assists the individuals in resolving their disputes. Mediation is a non-adjudicatory form of dispute resolution. That is, the issue is not resolved by a third party, but the parties to the dispute themselves. It is the parties to the dispute who have to resolve the dispute and who are responsible for the outcome of mediation. The role of a neutral third party, that is the mediator, is very limited in mediation. Okay, so in the words of the Mediation and Conciliation Project Committee, which was established by the Supreme Court, mediation is a voluntary, binding process in which an impartial and neutral mediator facilitates the disputing parties in reaching a settlement. The definition which is given by NCPC is self-explanatory, and at the same time, it highlights what are the main features of mediation. That is,
mediation is a voluntary process, meaning thereby that the parties who have any issue between them, they are willing to communicate with one another to solve that issue rather than arguing in a court of law. After that, mediation, the third party who is involved, the mediator, he has to be a neutral third party. And the third party must not have any form of interest either in the subject matter of the litigation or should have any close connection with either of the parties. Because if that is so, then it might give a reasonable doubt to any kind of bias, which will crumble the entire basis of mediation. And the most important feature of mediation is the role of a mediator, which distinguishes it from litigation or arbitration. The mediator only acts as a facilitator and not an adjudicator. It means that unlike a judge or an adjudicator who needs to decide who is right or who is wrong, the role of a mediator is not like that. Rather, it is much more important. The most important thing of a role of a mediator is that he needs to provide a conducive environment to the parties so that they are able to come forward and discuss their issues. He has to make sure that the parties are comfortable in talking to one another. At the same time, he has to make sure that there is a balance of power, that one party is not dominating the other party. He has to create such an environment where both the parties feel comfortable, that they can come forward and they can speak up their mind. Next slide, please. Okay. So many a times a question arises is, why mediation? Why not litigation or arbitration? Why should a person go for mediation? And the answer to the same is very simple, which lies in the inherent advantages of the mediation and its success rate. If we take the example of USA, then we can see that mediation is very prominent there, and almost 80% of the cases are resolved through mediation. So this success rate gives that mediation, if it is applied properly, it can resolve the disputes to a huge extent. And this is because mediation has so many advantages. We can start with the first of all, confidentiality. Mediation is a completely private process rather than litigation, which happens in open court. So if there is any family dispute or if there is any dispute between husband and wife, then people do not feel very comfortable in coming out and discussing their disputes in open. So mediation can provide a platform where the people come, they can discuss their issues in their privacy, they get all the privacy, they get the confidentiality, and therefore they can get more open and without any kind of hesitation, they can come out with their disputes. In 2019, the Delhi High Court had conducted a family courts mediation drive, and through which it was resolved that more than 75% of the cases were resolved through mediation. So we can see that if the mediation is applied properly, then it can give us a huge success rate. Secondly, in mediation, the role of the parties is very important because the parties have more of an active role rather than a passive role. They have to participate, they have to communicate with one another in order to understand the cause of their conflict and to find a solution which is mutually agreeable to both the parties. This is completely in contrast to litigation, wherein the parties sometimes feel as outsiders. Rather, in mediation, they are directly involved and they can directly voice their concerns. Also, mediation provides the parties with the flexibility which might not be provided with litigation. That is, in mediation, it is a very informal and party-friendly process. So even in litigation, sometimes there are so many procedural compliances and all that to be taken care of. The same is not with litigation. The parties can easily decide the procedure that they want to follow depending upon the cases, and then they can move forward with it, which leads to not only the parties feel more comfortable, but also it saves a lot of time and energy and money. So these things are saved by mediation. Then the most important thing is that mediation is something which preserves the relationship between the parties. This is because if we go into litigation, then litigation or arbitration, they usually end with one party winning or one party losing. So we always get attracted with the loser and winner tags. However, the same is not true in case of mediation because mediation, as commonly said, it is a win-win situation for everyone. Because parties come, they decide, and then they come to an amicable solution which is beneficial for all. And this is very important in commercial disputes, even in the COVID time, because we see that in COVID time, so many people are not able to fulfill their contractual obligations. So rather than dragging everything into media, rather than dragging everything into litigation, it is important that people come, they sit and they resolve their dispute by talking to one another. They can understand the point of view of the other person. And what happens is that
if they understand the point of view, then the relationship, they can continue with it even in the long term, and the relationship is not terminated. And if more and more cases are resolved through mediation, like even if the contractual disputes are moved towards mediation rather than the judicial thing, then the burden of the courts will also decrease, and they also will be able to dispose of more cases within the reasonable time. So we can see that there are a lot of advantages of mediation that promotes the people to actually opt for it and utilize it to the best capacity. Can I have the next slide? Actually, yeah. So mandatory mediation. In today's time, the term mandatory mediation is one of the very debatable topics because a part of the society believes that mediation in certain cases should be made mandatory, whereas there is a small population which believes that if parties are forcefully sent through the process of mediation, then it might lose the element of voluntariness, which is the essence of mediation. That parties should not be subjected to mediation without their consent. And if we look at the Indian scenario, we can see that in Rule 5F3 of the Civil Procedure Mediation Rules, as well as Section 12A, subsection 1 of the Commercial Codes Act, these are the two provisions which provide for mandatory mediation. That is, even without the consent of the parties need to go through mediation. The concept of voluntary mediation is somehow still underutilized in India, and there is some opposition to the mandatory mediation. And the opposition to mandatory mediation might be because people do not understand what exactly is mandatory mediation. Under mandatory mediation, parties are only required to undergo the process of mediation. It is not mandated that they need to settle their dispute via mediation as well. Only an attempt to mediation is mandatory and not the settlement. So parties are only required to go through the process of mediation, at least experience it for once, and if they believe that the mediation, if the dispute can be settled through mediation, then they should do it. It is not mandated that they must have to settle the dispute also while mediation. And this comes very helpful in certain cases where sometimes it happens that people are not willing to go for mediation because they do not want to appear weaker in front of the other party. Because if they go for mediation, then they might think that a doubt arises in the mind of other party that he might be wrong. That's why he wants to go to mediation. He does not have the guts to come and fight in a court of law. So that is an impression which is sometimes created in the mind of people because of unawareness. And mandatory mediation can prove to be extremely helpful in these cases because then the parties are required, without anyone giving in, the parties are required to go through the procedure of mediation. However, it must be noted that mandatory mediation cannot be made mandatory. Mediation cannot be made mandatory in each and every case. You need to look at the circumstances of the case. Even in these two provisions in Rule 12A, it has been given that pre-institution mediation is mandatory when there is no urgent relief. However, and in Rule 5, the mediation is mandatory if the court believes that there are elements of settlement. So even in these cases, some idea has been given that mediation is not mandatory in each and every case, but it has to be seen. Can I have the next slide? Tanvi, if I can come in, I just Yeah. want you to elaborate and clarify when you said mandatory mediation. Yeah. So if you can just throw a little light, because probably, I don't know, I just want a clarity there so that students can get in and understand where Okay. is the word mandatory mediation comes in. Okay. So mandatory mediation, as I said, mandatory mediation is that the parties are mandatorily required to go through the process of mediation, that they must undergo the process of mediation mandatorily. Okay, like first we discussed that there can be voluntary mediation where the parties themselves are willing. However, there can be cases of mandatory mediation where, for example, the court is insisting the parties to go for mediation. Like under Section 89 of CPC, if a dispute comes before the court and the parties are not willing to go for arbitration or conciliation, then the court has the power to send even unwilling parties to mediation if the court believes that there are elements of settlement, which mostly happens in matrimonial or commercial disputes where the court believes that the parties can talk amongst themselves. So what happens is that the court can ask them, they can mandate them that you must go through mediation, at least try it once, go through the process once and try to settle your dispute. Mandatory mediation does not mean that you must settle your dispute through mediation only. You can try the mediation, and if no dispute or if no settlement is reached,
then you can approach the court later on and you can proceed with the case as it is. So the concept of mandatory mediation is only undergoing the process of mediation is mandatory, and not like don't need to resolve your dispute. You don't need to come to a conclusion if that is not being made possible during the mediation. But at least you must explore the opportunity. You must explore the option of mediation. That is mandatory. So, Advocate Tanvi, what I Yeah. feel that. Hello. Ms. Shruti, I'm not able to hear you. You're not able to hear. Ma'am, she may have a connection issue. You can continue. Shall I continue? Yes, please. Okay, okay. Can I have the next slide, please? Okay. If there are any questions, we'll be more than happy to take them at the end. There is no issue regarding that. Okay, so we shall proceed with the Afcon's judgment. So Afcon's Infrastructure Limited, this is one of the most important cases in the area of ADR. The issue under the case was there were two parties and they had an agreement between them. However, certain disputes arose. So one party wanted to go through mediation and the other part, one party wanted to go through arbitration and the other party did not want to go through arbitration. And they did not have any arbitration clause in their agreement. So the question arose was, can the court mandatorily send the parties to arbitration under Section 86 if there is no arbitration clause in the agreement? So while answering the question, the court first of all analyzed Section 89 of CPC. And court identified that there are two anomalies. There are two issues which are present in Section 86. That under Section 89, under Section 89, subsection 2, the definition of various forms of ADR mentioned in subsection 1 are given. And in subsection 2, the definition of mediation and judicial settlement has been interchanged. So the court analyzed that it must be due to some typographical error, and the court proceeded to correct the same, that the definition of mediation and judicial settlement, they need to be interchanged because in the legislation in the particular session, there must have been some kind of typographical error. Then the court also noticed that Section 89, subsection 1 requires the trial judge to formulate the terms of settlement before referring the parties to any mode of ADR. Now, if we think clearly, that is not feasible because if the trial judge under Section 89, he himself or herself formulates the term of settlement, then there is nothing left to be done by the adjudicatory authority. If all the work is, if the terms of settlement are already formulated, then why should a matter even be referred to ADR? So taking that into consideration, and the same was noticed in the case of Salem Bar Association by the Supreme Court, wherein it was held that the words, the terms of settlement must be read as summary of disputes. It means that the trial judge only needs to formulate summary of disputes and thereafter refer the process for mediation under Section 89. There is no need for the trial judge to formulate the terms of settlement. Can I have the next slide? Okay. And thereafter, the court proceeded to discuss what are the certain cases which are suitable for ADR and certain cases which are not generally suitable for ADR. On the left side, we can see the cases in which the ADR is possible, which are cases which have any kind of commercial disputes or cases arising out of strained or sour relationships, such as family disputes or matrimonial disputes, or certain cases where there is a need for continuation of pre-existing relationship. For example, if there's any dispute between the neighbors, or if there is any dispute between employer and employee, then such disputes can easily be resolved through mediation and or any other form of ADR, and there's no need to take that into litigation because you need to preserve the relationship as well. However, it must be noted that there are certain category of cases which should not generally be referred to any form of ADR, such as any cases in which large public interest is involved or which include the prosecution for criminal offenses. They should generally not be referred to ADR. However, it must be noted that in a later case, it was held that some compoundable criminal cases may be referred to ADR, and we shall discuss the same later on. Next slide, please. Okay, then we come, what is the procedure of mediation? Now, under Section 89, it has been given that if any case arises before a trial judge, then he needs to see if the case is suitable for ADR and then proceed with the referring the case to any particular form of ADR given under there. But through this judgment, what the court did was it gave a particular procedure that the trial judge needs to follow, which is like
If any case comes before the trial judge, first of all, the court needs to ascertain if the case is suitable for ADR or not. And for referring that, it can refer to the bifurcation made earlier, as in the cases which are suitable for ADR and the cases which are not suitable for ADR. So if the case is not suitable for ADR, he needs to give a brief reasoning thereof and then proceed with the framing of the issues. Then we can go with the case as it is in the litigation only. However, if the case is suitable for ADR, then the first duty of the court is to explain to the parties the various forms of ADRs available under Section 89A, which are mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, lok adalat. The court needs to explain all of this. Then if both the parties agree, then the court can refer them to mediation or conciliation, since it requires the consent of both the parties. However, if there is if the both parties do not agree either to conciliation or to arbitration, then the court shall refer the dispute either to lok adalat or mediation or judicial settlement, depending upon the facts and circumstances of the case. If the reference, now that the reference has been made, and if a settlement is achieved between the parties, then the settlement comes back to the court and the court passes a decree, consent decree, under Order 23 Rule 3 in the lines of the settlement. The court needs to ensure that there is nothing illegal in the settlement, and then it can pass a consent decree. However, if even any of the mode of ADR is not able to give a proper settlement or is not able to resolve the dispute, then the case comes back within the ambit of the court. So this is also, if you can see that this is a case where mediation was mandated by the court, that the parties to the dispute were mandatorily sent to mediation. And if even in the mediation, the settlement was not achieved, then the court, then the case comes within the purview of the court only, and then it can proceed as normal. Can I have the next slide? Okay. So mediation in India. As we have discussed the advantages of mediation. We have discussed how mediation is incorporated under Section 89. So we can see that mediation is a very essential part of the Indian legal system. And the importance of mediation, it has been recognized in India, not just by the legislature, but also by the judiciary. To understand how mediation is clearly embedded in the Indian legal system, we shall go through these three headings once. And first of all, we need to understand how mediation is covered under various legislations. Can I have the next slide? Thank you. Okay. So we can see that Section 89, we already read that Section 89 covers mediation. There are other statutes which exactly cover the term mediation, like Section 12A of the Commercial Codes Act. It provides for mandatory pre-institution mediation, that before the case comes to the court, the parties must have exhausted the remedy of mediation. Then we also have Section 37 and 38 and Chapter 5 of the Consumer Protection Act, which provide, now Section 37 provides that if during the first hearing, the commissioner feels that there are elements of settlement, then the case can be referred to mediation. So we can see that even in these, even the consumer, the same mediation has been made a part of the legislation itself. And then if the case is settled, then it can come back to within the purview of the commissioner, and he can pass an order in lines of the settlement. Now, there are certain cases where the word mediation is not used, but something synonyms. For example, in the Hindu Marriage Act, if we talk about Section 14, subsection 2, or if we talk about Order 32A of CPC, they talk about settling the matrimonial disputes through reconciliation. So even though mediation as a direct word has not been used, its synonym has been used, and it can be understood that it will include mediation as well. So you can see that the legislature, even the legislature has certain limited cases provided for mediation. Can I have the next slide? Okay. Then we come to the mediation prescribed under the various court judgments. So sometimes it happens that the judiciary comes across certain cases where the law is silent whether a particular case can be referred to mediation or not. For example, the first case that we have here is Yashpal Chaudhrani case, in which the issue before the Delhi High Court was, can mediation be allowed in criminal matters? Because to discuss that criminal matters, the ADR is not generally allowed. But in this case, a certain exception was made, and it was held by the Delhi High Court that in compoundable offences, which are prescribed under Section 320 of CRPC, or in offences which can be considered compoundable under the inherent powers of the High Court, under those limited cases, mediation can be allowed, that the dispute can be referred to mediation. However, along with that, the court also laid down guidelines that first of all,
the first thing the court has to ensure that it is a case which can be, it is a type of criminal case which can be settled through mediation depending upon the facts of the case. So we can see that even in the criminal cases, to some limited extent, mediation has been allowed. Then we come to the case of Dayavati, wherein the issue was, can mediation be allowed under the offense of section 138 of the Negotiable Instruments Act, which is the dishonor of check. So while analyzing this, the court held that the offense under section 138 is generally a compoundable offense, and it is mainly a civil offense with only certain elements of criminality. Therefore, it was held that offenses under section 138, they can be referred to mediation for a settlement. And lastly, we have the case of K. Srivastava, wherein the question before the Supreme Court was, can the offenses under section 498A of IPC be referred to mediation? Now, 498A of IPC, these are non-compoundable offenses. So that comes in contradiction with the Yashpal Chaudhrani judgment. And therefore, this is also a major question, that can such a non-compoundable offense be referred to mediation? The court allowed the matter, the court held that in certain cases, even 498A offenses can be referred to mediation because they are related to matrimonial disputes. And we know that matrimonial disputes are generally considered to be settled through mediation. So only in limited circumstances, you can refer even the offenses of 498A of IPC for mediation. However, the court essentially provided that the judge must apply his judicial mind before sending the case, that he needs to ascertain if this case under 498A can be referred to mediation or not. The court has to apply its judicial mind in this case. Along with that, we have also come across various high courts rules, such as Delhi High Court has formulated his mediation rules. Punjab and Haryana High Court have formulated their mediation rules. So they formulated these mediation rules in order to govern the procedural aspects of mediation in their respective states. So by looking at all this, we can see that an effort is being made to encourage mediation at all the levels, let it be through judiciary or let it be through legislature. However, to what extent that effort has been successful shall be discussed by my learned friend, Gurkaran Singh. Hello, am I audible? Yes, you are. So before starting with the presentation, that what are the challenges to mediation, I think Tanvi has very well explained that the concept of mediation is voluntary and it's a non-binding, it's a binding process. So these are the challenges, that there is a lack of awareness among the common litigant. There is a resistance on the part of the lawyers. Then there is the question of what is the role of the reference judge. There are some infrastructural issues. This way I would be depicting through a picture. Then there is a question of that the parties actually don't appear for the process of mediation. Then there is the remuneration paid to mediators is too low, that we are not able to develop mediation as a separate profession or as a separate area of practice, unlike arbitration, which in the recent times has developed into a separate area of practice. And then because of all these factors, there is one other issue, that we are lacking quality mediators at the group. Tanvi, can you start with the next slide? So first point, which is the biggest challenge to mediation, is that there is a lack of awareness amongst the parties about the process of mediation. So in India, parties are habitually adversarial in nature, and they think that, you know what, if there is any dispute, then it can only be resolved within the four walls of the court. So they feel like, you know, if there is they consider the parties to the dispute, consider the other party as an opponent, and they not even consider them as a party. So what happens, like when you consider another person as your opponent, the attitude in your mind is that either we will win the case or we will lose the case. An analogy can be drawn here, like a common Indian litigant is like Duryodhan of the Mahabharata. He is like, mereko sab chahiye hi chahiye. If I go to a dispute, sab mera hi hai, and the other party is wrong. You know, and sadly, the role of the lawyer is like you can compare the role of the lawyer to the Shakuni Mama. कि बेटा कोई नहीं, you come to me, I will get the matter resolved, and तेरे को ही सब मिलेगा, कुछ नहीं ऐसा होगा. So another point, which is, you know, there is a lack of
there is a lack of awareness about mediation. People feel कि यार mediation में if we go to mediation, then ये ना हो कि सामने वाली पार्टी को ये शुरुआत से feeling आ जाए कि यार हमारा केस weak है या हमारा stand ही weak है. Then they feel that the other party would exploit their position. That you know what, they are very weak, they are weakened from the starting, so we would exploit this condition. And foremost thing that which many experts don't talk about, that a common Indian litigant approaches the court when he or she has unsuccessfully attempted at an informal mediation. Take this for an example. You have a matrimonial dispute. Most of the in most of the cases, अब घर का कहते हैं बुजुर्ग बैठता है बीच में समझाने के लिए कि यार आप मान जाओ, आप मान जाओ. Even though it is informal mediation, it is an informal thing कि यार घर के बुजुर्ग से हम समझ लें या घर का बुजुर्ग हमको कुछ समझा रहा है. But when this fails, then only the party approaches the court, or then only the party approaches the dispute resolution mechanism. So when we were working on this project thing, we met a lot of litigants saying that whether or not you know about mediation. So the first impression which will come like, यार what we know about mediation. Mediation is what, यार वो जो बाबा रामदेव सुबह दिखा रहे होते हैं. So there is a confusion, there lack of awareness is that people are even not able to differentiate between what is mediation and what is meditation. Second, if we as a lawyer or as a law student or as somebody who is practicing law, we tell them कि यार mediation is a process जहाँ पे ना आप बात करोगे और आपका तीसरा जो बंदा आएगा ना, वो जो डिसीजन है वो आपके हाथ में होगा, वो आपको सिर्फ समझाएगा. अरे सर ये तो हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, हमारे घर पे बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने हमको समझाने की कोशिश करी, वो हमने को समझाने में फेल हुए, तभी तो हम यहाँ पे आए, अब हमको कह रहे हो कि फिर से वहां चले जाओ. So this is the lack of awareness that people are not realizing that what is the potential of the what's the potential of mediation. And trust me, when you compare this to the US model, when you compare this to the USA, only 5% of the disputes are being resolved by the courts. Rest of the disputes are resolved through alternate dispute resolution mechanisms, which includes ADR, which includes conciliation, mediation, arbitration. Maybe they have developed more as a society, and we are still in this frame कि यार अगर कोई ऐसा कोर्ट डिस्प्यूट या कोई रेजोल्यूशन डिस्प्यूट का हो सकता है, then it can only be done through the court. So which brings me to the next point, that there is a complete negative role played by the lawyers. Tanvi, can you start with the next slide? So for any common litigant, if there is a dispute, the first point of contact is the lawyer. Now, the role of the lawyer is, many experts say that to make mediation successful, you should completely eliminate the role of the lawyer. But what they are not realizing is जो lawyer की सलाह होती है ना, that is like gold for any common litigant. If you start eliminating lawyers, then the position would be like matters जाएंगे ही नहीं mediation के लिए. अब जाएंगे भी तो party appear ही नहीं होगी. क्यों? क्योंकि the lawyer is idea, there is nothing, you just go enjoy there. आना आओ नहीं आना ना, sanction तो है नहीं है इसके अंदर, क्योंकि it is a voluntary process. It is not binding. So lawyers, and basically lawyers are also concerned, and they have a valid point. They are concerned that mediation would actually threaten their livelihood. Now, if they are saying कि यार mediation के अंदर there would be 4 sessions में lawyers की वैसे भी responsible, lawyers वैसे भी mandatory नहीं है कि हर session के अंदर जाए ही जाए. हमको हमारी फीस का क्या होगा, हमारी livelihood का क्या होगा. So this is one of the most gray areas that lawyers are not willing to accept mediation as a form, because we haven't developed this as an area of practice. We haven't developed mediation as a different profession. So this was the case in the US as well. So what US did, that by the 1980s, lawyers and state bar association have professionalized mediation. So I was talking to somebody, the role of the bar association is the most crucial. If they are able to convince the lawyers that if you are able to settle a certain number of cases through mediation, after a certain, in the promotion thing, that you would, if there is a promotion, everybody wants, either in the profession, either he wants the money or he wants the promotion to be elevated to the next level. So if the bar associations say that, and it's the qualification of a senior advocate, it is put that it would be considered how many matters the lawyer has resolved through ADR or through mediation, then would be taken as a consideration for the fact that the more the number of cases, more marks will be allotted for your promotion. So yes, this is done in the US, and that's why we are saying that US is able to resolve more cases through our mediation. So as a result, trained now, what has happened in US is that mediation has become a substantial part of their profession. The parties approach them, they in the US they analyze the case and they say, yeah, this can be resolved through mediation. We would help you. We will be the gatekeepers. We would
We would help you, we will help you in resolving the case. We will be helping you in getting your best partner, like best alternative, not that कि हम आपको कुछ भी नहीं करवाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं. So this is the key, that if there is resistance from the lawyers, mediation would be facing its biggest challenge. Next slide, Tanvi. Another point, like supposedly, as Tanvi has already explained, the role of the referral judge is the most crucial thing. Now, for a common litigant, judge is ultimately a judge sahab. If he says that, the mandate of section 89 and the mandate of AFCONS clearly states that before the reference, the referral judge should explain the basic concept of mediation and why such a matter is being referred to the process. Now, when we were, when we were in the practice, or when we were, doing this research project thing, we asked the judges, if the matters refer karte ho, do you follow this mandate? And you would be shocked to know that almost 70 to 80% of the matters, judges are not following this mandate. They simply refer the matter to mediation and say, यार हमने देखा कि 89 के mandate में आ रहा था, ये matrimonial dispute था, we just referred the matter to mediation. And they are also not to be blamed when the pendency of cases is standing at 4 crores and the judge and the judge to population ratio is staggering. There are no appointments. You cannot blame them because उनको भी तो दिन के 30-40 केस सुनने. But there were some judges who were saying that, we just take 2 to 3 minutes to explain कि यार mediation में जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई sanction नहीं होगी, आपको force नहीं करा जाएगा कि आप settlement करो ही करो, आप जाओ, बात तो सुनो उनके एक बार. You won't believe, in these cases, the judges who are following it, they are saying that around 70 to 80% cases are resolved through mediation. क्यों? क्योंकि हमने बता दिया, जज साहब क्या वकील साहब बड़े हैं या जज साहब बड़े हैं, तो जज साहब ही बड़े. जज साहब ने अपना काम करा, 2 से 3 मिनट ले कहते हैं if this happens, हमारी कम से कम 10-12 हियरिंग्स बची. बट ये समझना पड़ेगा, matters are just, you cannot refer a matter to mediation just for the sake of the reference. There should be, like, there is a thing ki when 89 was, when you read section 89 and when you read AFCON, the appropriate stage for reference is taken when the charges are framed. Sorry, when the issues are framed, not the charges, the issues. उसके बाद अगर आप रेफर करोगे तो पार्टीज के अंदर इतनी पहली वो आ जाएगी फीलिंग कि यार अब तो मैं इसको हराना ही है मेरे को, क्योंकि मेरिट्स पे बात होने लग जाती है उसके बाद. तो mandate of 89 and mandate of AFCONS needs to be followed by the referral just to, in order to make mediation a, what you can say, a better alternative for dispute resolution. अगर ये follow नहीं होंगे तो फिर जो next slide में मैं बताऊंगा वही होगा. Next slide चलेंगे. These are the infrastructural issues. Now this is our infrastructure. Mediation is, what the foundation of mediation is 2 things. It should be confidential. But you won't follow. When you look at Delhi में तो mediation centers are very good. There is a proper cabin, there is proper arrangements. But this is a mediation center in Gurugram. And you know what? When we, as a project, when we were working as a research assistant, ये फोटो हमने तब खींची थी जब कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट वहां पे मीडिएशन में चल रहा है. इन अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सम थिंग्स आर पर्सनल, जो बंद कमरे के अंदर ही आनी चाहिए. गुरुग्राम में क्या कर रखा है? अब गुरुग्राम ने ये कर रखा है, एक लाइब्रेरी बना रखी है, वहां पे मीडिएशन चला रहे हैं. गई कॉन्फिडेंशियलिटी, वहीं पे ही मीडिएशन फेल हो जाती है, क्योंकि यू नीड, एंड कमर्शियल मैटर्स हुए, कुछ ट्रेडमार्क का केस चल रहा है. अब इस प्रेमिसेस के अंदर अगर आप कोई ट्रेडमार्क का केस चलाएगा, ये इस प्रेमिसेस के अंदर कोई कहेगा कि मेरा तो सारा लीक फॉर्मूला ही लीक हो जाएगा, यहाँ पे किसी और ने सुन लिया, गया मेरा ट्रेडमार्क, गया मेरा पेटेंट, मैं क्यों कहूँ मीडिएशन के लिए. तो what we need to is really look at कि mediation is just not limited to the metropolitan cities. It is limited to, it is a method which should be resolved, which should be taken up all over the country. And I was really shocked कि ये गुरुग्राम का अगर ये हाल है, then consider कि पलवल में क्या होगा. So, and before we move to the next slide, there is another issue कि parties actually don't appear for mediation. What is happening कि referral judge, एक तो आपके पास awareness नहीं, लॉयर्स ने अपना मैंडेट निभाया नहीं, लॉयर्स ने कह दिया कि आप जाओ या ना जाओ कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा. रेफरल जज ने समझाया नहीं कि आपको रेफर क्यों किया जा रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि कैसा, तो पार्टी अपियर ही नहीं होती. हमने मीडिएशन को, व्हेन मीडिएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, द फर्स्ट मोस्ट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मीडिएशन की टाइम बचे, कॉस्ट बचे. हो इसका प्रैक्टिकली अगर हम जाएं तो काफी केसेस में हो इसका उल्टा रहा है.
मैटर्स मीडिएशन को रेफर कर दिए जाते हैं, एडवोकेट साहब कहते हैं जी ऐसा है 3 हफ्ते आपको जितना भी 60 डेज या 90 डेज का टाइम है, आप जाओ ना जाओ, पानी पियो वहां पे, अपीयर होना हो नहीं होना ना हो, सीरियसली लेते ही नहीं। और नॉन अपीयरेंस के अंदर द पोजीशन ऑफ नॉन अपीयरेंस इज लाइक कि अगर आप अपीयर हो भी नहीं रहे तो जो मीडिएटर है उसके पास कोई सैंक्शन की पावर भी नहीं है। मीडिएटर कहता है कि हम पूरे दिन यहाँ बैठे रहते, पार्टीज आती ही नहीं, अगर आती है तो एक पार्टी आती है, प्लेंटिफ बेचारा परेशान होकर चला जाता है कि डिफेंडेंट आया ही नहीं है इस केस के अंदर। तो फिर व्हाट द लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इटली। इटली वाज आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम कि पार्टी दे वर रेफरिंग मैटर्स टू मीडिएशन and parties were not appearing. What they did, this is a very important lesson which the Indian legislature or the Indian law authority should take from them. They said, you look what, when we refer a matter to mediation or when the matter is when goes for mediation, first appearance is mandatory for that. You know what, आपको पहली अपीयरेंस पे तो मीडिएटर के पास जाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट मीडिएटर को चांस तो मिले समझाने का कि मैं बैठा क्यों हूँ यहाँ पे, या मेरा क्या प्रोसेस क्या है, या ऐसा भी तो अभी जैसे तन्वी कह रही थी, दिस इज अ रियलिटी मोस्ट ऑफ द पीपल और बिकॉज ऑफ ऑल द चैलेंजेस व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आधे से ज्यादा लिटिगेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि मीडिएशन है क्या चीज। then if they go for, if the first appearance is made mandatory, even though some might say कि it would voluntariness चली जाएगी इसके अंदर, but considering कि India is facing such challenges and it is a reality कि ये सब challenges हैं, even the legislature, even a common advocate जो मेरे को भी 1 साल हुआ practice करते, even I can recognize कि हाँ these are the challenges। तो at least make the first appearance mandatory कि वो जाएं तो सही। Italy has done that, and what Italy is also playing a very smart game, which is saying कि ठीक है अगर आप पहली appearance पे गए, mediation successful नहीं हुआ, make minimal सी fees और वापस आ जाओ। But अगर आप first appearance के बाद parties decide कि we want that matter should be resolved through mediation, then they are providing a tax credit of 500 euros. Incentivize भी हो गई, mandatory भी चला गया, appear भी हुए, chances क्या है? In today's time 70 to 80% of matters are in Italy are being resolved through mediation. Tax credit का incentive तो है ना वहाँ पे, यार हम जाएंगे, पहले तो आपने कह दिया कि हम सैंक्शन लगा देंगे अगर आप पहली डेट पे अपीयर ना हुए, फिर आप अपीयर हुए, मीडिएटर को मौका मिला अपना दिखाने का कि हम कैसे मैटर रिजॉल्व हो सकता है, अब बात तो करो, आइस ब्रेक हो गई दोनों पार्टीज के बीच में, मैटर रिजॉल्व हो जाते हैं। सिविल डिस्प्यूट्स और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पे अगर हम ये मैंडेटरी फर्स्ट अपीयर भी मैंडेटरी करते हैं, देन देयर आर चांसेस कि जो अभी हमारा रेफरल का रेट है या जो अभी हमारा पर्सनली रेट है कि कितने मैटर्स हम मीडिएशन से रिजॉल्व कर पा रहे हैं, तो कम से कम नहीं तो डबल या ट्रिपल होने के चांस है, क्योंकि पार्टीज को पता तो चलेगा कि मीडिएशन है क्या चीज। नेक्स्ट स्लाइड चलो। Now, Stonebrook remuneration for mediators. Why should what honorarium as per for mediators as per MCPC manual? When you were reading the MCPC manual, we were really shocked to find, and when we were having the word to mediators, now mediators, when you read the MCPC manual, it clearly mentions the fact that an advocate having 10 years of practice is qualified to be a mediator, to be empaneled as a mediator. I'm not talking about private mediation, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम सिर्फ MCPC की गाइडलाइंस की बात करते हैं। ठीक है, आप 10 साल की जिसकी प्रैक्टिस है वो मीडिएटर के लिए क्वालिफाई है, he or she goes undergoes a training for 40 hours. What is being paid? 3,000 for a settled case. Now you spend 6 to 7 hours, 6 to 7 minimum mediation के अंदर 4 से लेके 7 तक सेशंस होता है, केवल 10-15 भी चले जाते हैं। 3,000 is being paid. Now how can we can say कि what the lawyer says कि यार इतना तो मैं 1 घंटे की कंसल्टेशन दूं, मेरे को तो 5 साल वहां के मिल जाते। This is the issue. Some people come to me and say कि यार what you are talking is ऐसे तो कोई लेगा ही नहीं मीडिएटर। At least उनको कुछ तो incentivize करो। At least quality mediators क्यों आएंगे आपके पास? Arbitration पे देखो तो what they are paying is 3,000 to around 20,000 per session. Now this is the point number 2, and point number 3 is the reason कि arbitration develop हो चुका है। Matters are being referred to arbitration. Matters are being resolved through arbitration. क्यों? एक आपने incentivize, थोड़ा सा incentivize कर दिया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया, एक एक्ट दे दिया, सॉरी टू से, बट मीडिएशन का तो अपना एक्ट भी नहीं। मीडिएशन के प्रोविजंस और लॉ के अंदर प्रोविजन दे दिया कि मीडिएशन का अपना लॉ नहीं। चलो ठीक है, वो भी हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलो नेग्लिज हो जाएगा, कभी ना कभी आए, इंसेंटिवाइज तो कर दो। अब कंपेयर दिस टू कैलिफोर्निया इज द स्टेट जहाँ यूएस के अंदर जहाँ पे 95% है रेशियो जो मैटर्स मीडिएशन से रिजॉल्व हो जाते हैं। The low range, minimum range is like $200 to $350 per hour. You have started incentivizing the mediation. अच्छे lawyers, best of the lawyers are acting as a mediator,
and high range goes to $10,000 to $20,000 per day. Community mediation का rate is around $100 per hour. जो law students हैं या fresh law graduates हैं, you have started incentivizing. अच्छे आपके पास mediators आके आपने पहले में मैंने कहा कि मैंडेटरी कर दो पहली अपीयरेंस, दूसरे में मैंने कहा उनका रेन्यूमरेशन आप अच्छा कर दो, मैटर्स रिजॉल्व अपने आप स्टार्ट होने हो जाएंगे. अभी का जो रेफरल रेट चल रहा है उससे नाना करते भी 10 to 15 टाइम्स देना चांसेस अगर हम नेक्स्ट चीज भी कर दें, व्हिच इज लाइक दैट बी नेक्स्ट स्लाइड. आपने इंसेंटिवाइज कर दिया, आपके पास अपने क्वालिटी, आपने मैंडेटरी कर दी, क्वालिटी मीडिएटर्स आ गए. नाउ कमर्शियल कोर्ट एक्ट के अंदर जो सेक्शन 12A वाज इंसर्टेड, it was termed as a game changing कि at least we have one law which has mandated mediation, but when you read that act, empanelment की जो power दे दी गई again is वो given to the state legal service authority. अब what we have realized कि state legal service authority के जो empanelment में mediators हैं, they are not of the quality की वो complex commercial matters को समझ पाए. हालत ये है कि this was a case which I was reading in Dameric Battery Separator versus Union of India. The petitioner had to approach the Delhi High Court because the National Legal Service Authority was unable to find a suitable commercial mediator within its pool of mediator. है ही नहीं. हम वहां पे जाएंगे, वहां पे अब you cannot see कि एक मैट्रिमोनियल लॉयर है 10 साल का, क्योंकि आपने मैंडेट क्या दे रखा है 10 साल का एक्सपीरियंस हो, और अगर कोई एक्सपर्ट है तो आपने और एक्सपीरियंस 15 साल का कर दिया. क्वालिटी मीडिएटर साइकोलॉजिस्ट नहीं आ पाते, क्यों? साइकोलॉजिस्ट पे 15 साल का अपने एक्सपीरियंस का बार लगा दिया, लॉयर्स पे 10 साल का बार लगा दिया. 10 साल का कोई लॉयर है जो मैट्रिमोनियल लॉयर है, एम्पैनलमेंट में आ गए, वो मैटर रेफर पार्टीज के पास या तो चॉइस होती है कि वो खुद चले जाए, खुद अपना मीडिएटर अपॉइंट करें, पर वो प्रोसेस ही नहीं दिया गया कि किस प्रोसेस से करेंगे. फिर आपके पास बचता है कि जो पैनल में उसमें से चूज कर लो. आई एम रियली सॉरी टू से, बट पैनल जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में जो पैनल में मीडिएटर है, वो कमर्शियल मैटर्स को डील करने के लिए इतने क्वालिफाइड ही नहीं. कम्प्लेक्स टर्म्स होती हैं, कॉमर्स, आई एम हम बीकॉम ऑनर बैकग्राउंड, अगर मेरे को कहा जाए कि आप जी इवन तो मैंने लॉ करा होगा, ठीक है, बट लॉ में मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं है, मैंने कहा मेरे को मैटर दे दिया कि आप जी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का मैटर है, जाके उससे मीडिएट करो. क्वालिफाइड तो मैं हूँ, मेरे पास पैनल में आ गए, बट क्या मैं उसको कर पाऊंगा ढंग से? हो सकता है कि मैं 10 साल के एक्सपीरियंस में सीख भी गया हूँ. आई एम नॉट डीमीनिंग, ऐसे बहुत हैं जिन्होंने इंटर डिसिप्लिन के अंदर अच्छे प्रैक्टिस करी, बट अगर हम बट एक चांस वो है कि अगर कोई साइंस अच्छा साइंटिस्ट हो, अच्छा कोई बंदा हो जिसने ये चीजें ग्रेजुएशन से पढ़ रखी हो, सिर्फ लॉ ना देखा हो, क्योंकि मीडिएशन में लॉ से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो चीज की होती है वो होती है कि आप कंसेप्ट्स को क्लियरली समझ पाओ. कंसेप्ट्स आप लॉ के नहीं, कंसेप्ट्स आप उस चीज के, पेटेंट में क्या होता है, पेटेंट्स के अंदर फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, केमिकल्स कौन से होते हैं. एज अ लॉ कॉमर्स मेरे को पता है कि लॉ, पेटेंट का लॉ ये कहता है, और मेरे को ये फॉर्मूलाज ये वो मैं कैसे उनको मीडिएट बीच के ग्राउंड पे लाऊं. तो मैंडेट गिवन टू द स्टेट लीगल अथॉरिटीज, कुछ एक्ट्स में दिस हैज बीन इंप्रूव्ड. when you read the consumer protection का mediation rules and when you are reading company law mediation के rules, they have realized this mistake. what they have done कि उन्होंने concerned authorities जो उस act के अंदर बनाई गई, जैसे company law के अंदर regional directors को powers दे दी कि आप impalment करो mediators. अब उसको पता, जो impalment कर रहा है, he knows कि what kind of mediators we want. at least there is a chance कि वहां पे शायद आपको quality mediators मिल जाएगी, मतलब वहां के challenges अपने ही हैं, बट एटलीस्ट हम अगर हमने कोडिफाइड लॉ नहीं बनाया अभी तक, एटलीस्ट हम पावर्स जो इम्पैनलमेंट की है, इम्पैनलमेंट की पावर्स उन अथॉरिटीज को दे जो जिनको पास एक्सपीरियंस है इन चीजों को हैंडल करने का, जिनको पता है कि इस तरह के मीडिएटर्स चाहिए हमको. एंड लास्ट इज लाइक वी नीड मोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑन मीडिएशन. आई वाज टॉकिंग, बार काउंसिल ने अब मैंडेट किया लॉ कॉलेजेस के अंदर कि दैट देयर शुड बी अ सब्जेक्ट फॉर मीडिएशन, अ सेपरेट सब्जेक्ट फॉर मीडिएशन. बट अनफॉर्चुनेटली इससे पहले ये था ही नहीं, एंड आई नो सम लॉ कॉलेजेस जहाँ पे मीडिएशन पढ़ाया ही नहीं जाता. देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वी वुड बी गेटिंग गुड क्वालिटी मीडिएटर्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स. नेक्स्ट स्लाइड चलें. नाउ after we have discussed the challenges, there is another thing that we need a codified law. Sorry, the need for a codified law is like, if you just tell me why would any person want to go for a dispute resolution mechanism, sorry, जिसका अपना कोई लॉ ही नहीं है, जो अभी भी किसी और लॉ पे डिपेंडेंट है कि प्रोसेस मीडिएशन का क्यों उसके अंदर रेफर करा जा सकता है, इसलिए हम मीडिएशन को चले जाते हैं. The first, and I will just talk down the challenges before I explain them each by each.
first challenge is like there is enforceability of the mediation settlement. Second is the perfectity in the current statutes covering mediation. The dilemma between कई जगह पे आप देखेंगे जैसे तन्वी कह रही थी reconciliation वर्ड यूज कर दिया गया, आप देखेंगे कई जगह conciliation और mediation दोनों को इकट्ठे यूज कर दिया गया, बट सेक्शन 89 साफ कहता है कि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. यू कैन नॉट कंपेयर अ mediation to a conciliation. Then private mediation, now the private mediation पे तो law छोड़ो, enforceability के लिए भी कहते हैं कि these would be categorized as just contracts. Now another is providing clear guidelines of clear kind of guidelines to the disputes to be fit to be mediated. Now as Tanvi told, अभी भी जो guidelines हैं वो हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं. सबॉर्डिनेट जुडिशरी को अभी भी इस मामले में श्योरिटी नहीं है कि किस तरह के मैटर्स हमने रेफर करने हैं. एफकॉन्स ने एक लिस्ट दे दी जो नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट थी. उसके बाद जो गंगा से कहते हैं ना, अ लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन थ्रू द यमुना, बहुत चेंजेस आ चुके हैं. बट एक लॉ स्पेसिफाइड अगर हो जाए कि यार दीज आर द मैटर्स जो मीडिएशन को जाएंगे, जो मैंडेटरी मीडिएशन को जाएंगे, या ये वाले मैटर्स आप रेफर कर सकते हो. अभी कोई गाइडलाइंस डेवलप हर तीसरे साल कोई ना कोई डेवलप हो जाती है. At least there should be a codified law which resolves these kind of issues. With another is that we should be reducing the dependency on the high court rules. एक हाई कोर्ट 2004 में रूल बना के बैठ गया दिल्ली वाला. त्रिपुरा ने हाई कोर्ट में जो रूल्स बनाए वो 2016 में बनाए जा रहे हैं. उसी तरह से जब आप स्टैट्स व्हेन यू कंपेयर द स्टैट्स वो रेशियो भी वही आती है. दिल्ली में अराउंड 30,000 मैटर्स रेफर किए जाते हैं मीडिएशन में. त्रिपुरा में 2008 से लेके 2016 तक ओनली 5 मैटर्स वर बीइंग रेफर्ड टू मीडिएशन. रीजन रूल्स ही नहीं थे उनके पास. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ वी वांट टू create some kind of credibility for mediation, we need a codified law. Can we next slide? So enforceability of the mediation settlement. When Justice Bobde, the former CGI, at least when he was speaking at a conference, he also took the note that we need a codified law, because the biggest issue which mediation is facing right now is that settlement is done. Now how would we enforce it? Section 89 does not talk about the outcome of mediation and how it should be enforced. It took Supreme Court AFCON's judgment to clarify that dispute settlements would be governed by the provisions of the Legal Service Authorities as 1987, and उन्होंने यूज किया था that mediation is deemed to be a लोक अदालत, but उन्होंने एक क्लॉज और डाल दिया कि जो सेटलमेंट हम करेंगे मीडिएशन में होगी जो सेटलमेंट, then it has to be placed before the court for recording the settlement, and the settlement is not automatically enforceable. Now you just tell me, we are saying that we want to promote mediation, and mediation is a fantastic concept. All over world में ये माना गया है कि matters तो mediation से जितनी efficiently और जितने time consuming way में resolve करे जा सकते हैं वो नहीं कर सकते. But why would a party want to go for a dispute resolution mechanism जो automatically enforceable ही ना? उस फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा. Now what happens कि when we were doing this research project, parties वहां पे साइन कराती हैं, चलो कन्विंस हो गए, फिर आ जाते हैं एडवोकेट साहब, वो कहते हैं आपने साइन कर दिया, चलो कोई नहीं, बट इस पे तो आपको बहुत नुकसान हो गया. पार्टी कहती है अच्छा अब हम क्या करें, वो कहते हैं चलो कोई नहीं आप टेंशन ना लो, अभी कौन सा इन्फोर्स कराना, अभी तो कोर्ट के पास जाना है. कोर्ट में वकील साहब जाते हैं और ये कह देते हैं कि जी ये जो ड्यूरेस पे साइन किया गया, ये जितने भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ के जितने भी वो दे रखे, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, मैं था ही नहीं वहां पे, मैं पार्टी समझ नहीं, मैं मीडिएटर ने इसको फोर्स कर दिया. नाउ अनदर चेन ऑफ लिटिगेशन स्टार्ट्स कि जी अब डिफेंडेंट के कहा जाता है कि आप एक काम करो, आप ये प्रूव करके दिखाओ कि ये जो मीडिएशन सेटलमेंट है ये वॉलंटरीली साइन नहीं करेगी. कर क्या रहे हैं हम वो एक जो सेटलमेंट हो गई है उसको इन्फोर्सेबल करने के लिए हम एक और उसको मिडिल ग्राउंड देते हैं कि तू यहाँ तो एक काम को तूने वहां से साइन कर दी, तो यहाँ से निकल. अब हम कमर्शियल कोर्ट एक्ट की बात करते हैं, वहां पे एटलीस्ट ये चीज करेगी कि उनको जो उसका जो अवार्ड है वो कंसेंट अवार्ड की तरह ट्रीट करा जाता है, विच इज मच वे बेटर देन व्हाट इज बीइंग डन इन कोर्ट रेफर्ड और कोर्ट एनरिच्ड मीडिएशन. बट देन अगेन देयर इज अ चैलेंज कि अगर कंसेंट अवार्ड अगर आर्बिट्रल की कंसेंट अवार्ड अगर एएनसी एक्ट की तरह देखा जाए उसको दे दिया गया, तो वहां पे चैलेंज और आ जाता है सीट और वेन्यू का. नाउ दोज हु आर वेल वर्स्ड इन आर्बिट्रेशन लॉ विद लो के सीट एंड वेन्यू का जो कंसेप्ट है बहुत बड़ा चैलेंज बनता है, जो चैलेंज कंसेंट अवार्ड. बट स्टिल आई कैन रियली से कि एटलीस्ट ये मैकेनिज्म जो पहले वाला मैकेनिज्म है उससे तो बेटर है, कुछ तो हम उसको लीगल स्टेटस दे रहे हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेटलमेंट प्राइवेट मीडिएशन, वहां तो हालत और भी खराब. वहां यू मतलब पार्ट एक्सपर्ट से कि यू नो व्हाट यू हैव जैसे प्री आर्बिट्रेशन का क्लॉज दिया जाता है,
जहाँ पे जैसे आर्बिट्रेशन का क्लॉज दिया जाता है, आप एक काम करिए, आप कॉन्ट्रैक्ट में कंपल्सरी कर दीजिए कि मीडिएशन का क्लॉज डाल दिया। नाउ यू मीडिएशन का क्लॉज डाल दिया पार्टीज, नाउ पार्टीज गो फॉर मीडिएशन, दे ऑप्ट फॉर प्राइवेट मीडिएशन और एड हॉक मीडिएशन। उसकी इन्फोर्सिबल पार्टीज ने वहां पे सेटलमेंट कर ली, वन ऑफ द पार्टी से लॉ आई वांट टू इन्फोर्स इट, कोर्ट्स क्या कहती है जी ऐसा है कि ये आपने इन्फोर्स कर दिया, अगर इसकी इन्फोर्सिबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ ओनली, जो आपकी सेटलमेंट करी गई। अब कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ के सारे से लिटिगेशन से बचने, अब पार्टीज जिसका जो नहीं चाहता इन्फोर्स करना वो तो कहेगा चलो ठीक है इस मामले में लिटिगेशन करते रहो, 5 से 6 साल और लग जाएंगे, मेरे को कम से कम जो मैंडेट मेरे को सेटलमेंट मैंने करी है वो मेरे को फॉलो ही नहीं करनी पड़ेगी। तो इन्फोर्सिबिलिटी एक क्लियर कट मैकेनिज्म होना चाहिए कि ऐसा हो कि सेटलमेंट आपने कर दी, अगर वो बिल्कुल लिमिटेड ग्राउंड्स तो उसके चैलेंज के लिए, वो लिमिटेड ग्राउंड्स को देने के बाद डिस्पोजल भी इसका जल्दी करो, अदरवाइज व्हाट वी आर लूजिंग इज द एसेंस ऑफ मीडिएशन, टाइम कंज्यूम हो क्या रहा है कि हमने मीडिएशन इंट्रोड्यूस किया टू सेव द टाइम, बट इसका वाइस वर्सा होने लग गया कि अब मीडिएशन पे जो इन्फोर्सिबिलिटी कराने के लिए उतना ही टाइम लग जाता है जितना लिटिगेशन में लगता है। नेक्स्ट स्लाइड चलिए। सो प्राइवेट मीडिएशन, Singapore has done, and Singapore and French courts have recognized private mediation as a part of their codified law. But what if India has done? So private mediation are merely terms of settlement agreed upon by the parties having the effect of a legal contract. In the absence of a legal framework which allows settlements to be binding, recognized and enforced, events of non-compliance of terms call for litigation on the grounds of breach of contract rather than simply filing an enforcement petition, which is the case in typical private mediation across jurisdictions. सिंगापुर ने ये क्या किया कि आप जाओ, आपने प्राइवेट मीडिएशन पे गए, आप जाके कंसेंट डिक्री ले आओ कोर्ट के अंदर से वहां पे, और अगर कोर्ट कंसेंट डिक्री दे देगा, कोर्ट की डिक्री में और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में और कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करने से कितना फर्क आ गया। तो कोर्ट की डिक्री को एज लॉ स्टूडेंट यू नो कि कोर्ट की डिक्री को एग्जीक्यूट करना इज मच वे सिंपलर एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिंग ऑफ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंगापुर हैज डन दैट, देख लीजिए फिर से वो प्राइवेट मीडिएशन फॉलो करी जा रही है। 70 से 80% ऑफ द मैटर्स आर रिजॉल्व्ड थ्रू नॉट इवन थ्रू कोर्ट एनेक्स और कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन, बट दे आर रिजॉल्व्ड थ्रू प्राइवेट मीडिएशन। One more thing, need for a codified law is something जो हमको चाहिए because in a case of private mediation there is no minimum qualification which is specified. I can be a private mediator, you can be a private mediator, anybody who is not even a law graduate is terming because there is no qualification, there is everybody is saying कि जिसको कुछ everybody wants to be a mediator is saying कि मैं mediator और मेरे पास आ जाओ, वैसी अवेयरनेस नहीं है। पार्टीज जो चाहती हैं कि एड हॉक मीडिएशन हो जाए उनके पास चली जाती है, वो कुछ भी सेटलमेंट बना देते हैं, वो कोर्ट में जाती है, वो कोर्ट कहती है जी है ये तो लॉ के अगेंस्ट है, जाओ वापस जाओ यहाँ से आओ। तो एक मिनिमम सेट ऑफ क्वालिफिकेशन, अ मिनिमम सेट ऑफ टेस्ट, अ मिनिमम सेट ऑफ वी नीड अ गाइडलाइन की जो सेज कि हाँ इतना तो मिनिमम है आपके मीडिएटर बनने के लिए, हम वो दे ही नहीं रहे। प्राइवेट मीडिएशन की हालत तो हमने उससे भी बुरी कर रखी है, कोर्ट एनेक्स और कोर्ट रेफरेंस। नेक्स्ट स्लाइड चले। Now I will, as this is a repetition, but I would like to discuss 2 laws. अब there are lacunas in the laws जहाँ पे हमने section 12 of the Commercial Court Act में हमने कहा कि तनिव next slide करना। तो section 12 provides कि plaintiff should exhaust the remedy of mitigation before filing a commercial matter under Commercial Court Act, but हमने वहां पे एक टर्म यूज कर दिया कि सेक्शन आल्सो एक एग्जेम्पशन दे दी अर्जेंट इंटरिम रिलीफ की। अब अर्जेंट इंटरिम रिलीफ व्हेन यू रीड द वर्ड इज नॉट एनीवेयर इन द लॉ नॉट इट इज इन द रूल्स। हमने क्या किया जी, लॉयर्स नाउ आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग दिस कि हम जज साहब आस्क करते हैं कि आपने ये गए क्यों नहीं मीडिएशन में, हमने एग्जॉस्ट क्यों नहीं करी जी, मेरे में तो अर्जेंट इंटरिम रिलीफ है, मैं कैसे जाऊं। कमर्शियल मैटर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक अर्जेंट इंटरिम रिलीफ इज रिक्वायर्ड, एग्रीड, बट हमने फिर मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं उस चीज को। हमने एक लकूना, व्हाट हैपेंस कि ड्राफ्ट्समैन कुछ ना कुछ लकूना छोड़ देते हैं हमारे लॉज के अंदर, एंड दीज आर एक्सप्लॉइटेड बाय द लॉयर्स और द पर्संस हु जस्ट वांट टू अवॉइड मीडिएशन। अनदर लकूना, according to the commercial court pre-settlement rule, the opposing parties can refuse to participate in the mediation proceedings, which leads to a non-starter of the whole mediation process, making a complete mockery of the word which is mandatory. Now what happens कि plaintiff ने कहा कि मैं institute करना, तो defendant कहता थी मैं तो आ नहीं,
नाउ मीडिएशन ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक पार्टी आपस में मीडिएशन कर रही है, सेकंड पार्टी को एटलीस्ट हम ये तो कहें कि the plaintiff or if the plaintiff asks कि I want to resolve this dispute through mediation, at least appearance हम वही वाली बात पहली डेट पे तो appearance की मैंडेटरी करते हैं, मैंडेटरी हम कर नहीं रहे, फिर हमने मैंडेटरी वर्ड ही क्यों यूज किया इसके अंदर? मैंडेटरी का तो यही मतलब है ना एटलीस्ट कि दोनों पार्टी कम से कम ट्राई तो करें मीडिएशन को। आपने उसको एक और राइटर दे दिया कि जी अपोजिंग पार्टी आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक। अब एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसने तो मैटर रोज भी कॉम्प्लेक्स कर दी। नेक्स्ट स्लाइड चलेगी। सो एक जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट की, गंगा तारो वजीरानी वसे दीपक रहेजा, इन्होंने ये कह दिया कि जो वर्ड 12A में कंपल्सरीली वर्ड यूज है ना, दैट कि वो प्रोसीजरल है और वो सब्सटैंटिव नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि अगर पार्टीज ने ट्राई किया कि उनका जो मैटर है वो नेगोशिएट हो जाए, या पार्टी से ट्राई किया प्रोसीजरली कि हमारा मैटर रिजॉल्व हो जाए किसी तरीके से बिफोर कमिंग टू द कोर्ट, देन इट वुड बी कंसिडर्ड कि उन्होंने मीडिएशन का ट्राई कर लिया। अब आप ये सोचेंगे कि यार बात तो ये ठीक कह रहे हैं, बट व्हाट इट इज अंडरमाइनिंग इज द फैक्ट कि आपने मीडिएटर अपॉइंट इसलिए किया है कि वो एक कॉमन जो आपकी undermines the process of mediation and the skills of the mediator. A standard or a private attempt at amicable resolution of a dispute by the parties or their representatives substantially differs from routing a dispute through the process of mediation. Now, mediator आपने अपॉइंट किया हुआ कि वो पार्ट सुनने, mediator आपका एक्सपर्ट है, mediator can really guide you कि ये हो सकता है। बट इन्होंने ये कह दिया कि जी ऐसा है कि अगर आपके किसी बुजुर्ग ने ट्राई किया या आपने मेल डाला है कि यार ये मैटर में रिजॉल्व कर लूं, तो मैटर एक काम करते हैं, मैटर रिजॉल्व कर लेते हैं, और ये उन्होंने आपस में कुछ कन्वर्सेशन करी आपस के अंदर, तो वो माना जाएगा कि दे हैव ट्राइड फॉर मीडिएशन। नाउ ये हम करके आ रहे हैं, on one hand when this section was introduced, it was really felt that it was one of the best things कि हमने एक जगह तो मैंडेटरी कर दिया, बट हमने मैंडेटरी कर भी दिया, फिर भी ये तो लूपहोल्स छोड़ दिया इस लॉ के अंदर कि इस समय मैंडेटरी जो वर्ड है वो उसकी अपने आप में मौखरी बनी हुई। बचा कुचा काम ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट नहीं करती, वो कहती है जी आपने काम के मैटर्स आपने ट्राई किए रिजॉल्व करने के लिए, आपस में एमिकेबली रिजॉल्व नहीं कर पाए, आपके मैंडेटरी मीडिएशन की जो हमने लिमिट मैंडेटरी मीडिएशन का जो क्लॉज था वो आपने फुलफिल कर दिया, अब आओ जो कोर्ट के, तो हमने ये डाला ही क्यों? तने भी वो लॉज वाली स्लाइड लगाना एक बार, एक स्लाइड और। So next we will discuss the section 442 of the Companies Act 2013, read with Companies Mediation and Conciliation Rules 2006. Now first thing, Companies Mediation and Conciliation Rules. अब ये रूल्स और भी महान है। इन्होंने क्या किया हुआ कि मीडिएटर स्लैश कंसिलिएटर, मीडिएशन स्लैश कंसिलिएशन। अरे भाई मीडिएशन और कंसिलिएशन आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। हम उसमें करना, अगर आप ये कहते हो कि कंसिलिएटर प्लेज अ वेरी एक्टिव रोल, कंसिलिएटर तो आप कंसिलिएटर तो आपको ये सजेशंस भी दे सकता है कि आप इस तरीके से रिजॉल्व कर लो, वो चाहे तो ऐसे रिजॉल्व भी कर सकता है, वो थोड़ा सा एडजुडिकेटरी है। मीडिएटर का जो रोल है कंसिलिएटर के रोल में देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंस, बट हमने ये मीडिएशन एंड कंसिलिएशन रूल्स डाल के और कंफ्यूजन पैदा कर दी। अब पार्टीज कहती है कि मीडिएटर है या जो कंसिलिएटर है उसको ये नहीं पता कि वो रोल किसका फुलफिल कर रहा है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे, अच्छा अगर हम ये कहें कि इनके रूल्स 25 और 26 दे रखे हैं, which says कि if there is settlement through mediation / conciliation, the matter would be again sent back to the concerned authority जिसने ये मैटर रेफर किया। बट कंसिलिएशन में तो ऐसा होता नहीं है। When you read section 73 and 74 of the ANC Act, वहाँ पे तो ये आता है कि if the parties have signed that agreement, then it would be under section 74, it would be treated as a consent decree, as a consent award, as an arbitral award. हमने एक मीडिएशन एंड कंसिलिएशन का वर्ड यूज करके यहाँ पे सारी ज्यूरिस्प्रूडेंस में और कंफ्यूजन पैदा करती है। These are the lacunas which, that's why we need a codified law कि first of all ये the perplexity है, mediation है क्या, conciliation है, वो resolve हो। Whenever you read any expert opinion कि mediation के ऊपर, the first thing it says कि mediation was first introduced in the Industrial Dispute Act 1947। अरे भाई वहाँ पे conciliation used है, दोनों में difference है। यहाँ पे कोडिफाइड लॉ नहीं है तो कंसिलिएशन को भी मीडिएशन की तरह समझने लग जाते हैं, मीडिएशन कंसिलिएशन है, कंसिलिएशन मीडिएशन, देयर इज अ डिफरेंस भाई। जब तक हम ये डिफरेंस रिजॉल्व नहीं करते, इस डिफरेंस को रिजॉल्व करने का तरीका एक ही है कि हमारे पास एक कोडिफाइड लॉ हो ऑन मीडिएशन ना। तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट
अब क्वेश्चन है जी, कैन मीडिएशन सेटलमेंट बी ट्रीटेड एज आर्बिट्रल और कंसिलिएशन अवार्ड्स? बहुत ही मतलब कई बार ये लगता है कि हम लोगों ने पूरी जो लॉ बना रहे थे उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लकूनस छोड़ दिए। अब if the arbitrator refers the matter to mediation under section 30, then वो जो सेटलमेंट करी जाएगी then can be treated as a mediation settlement, sorry as an arbitration की settlement या as a conciliation की settlement। but यहाँ पे clause है कि is only operative when the parties have elected to settle a dispute after initiating arbitral proceedings if parties have opted। अब वही बात है, अगर आपने क्लॉज डाला आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेशन ने आपको मीडिएशन के लिए भेज दिया, मीडिएटर से आपने मैटर करवा लिया, तब तो ये आपका आर्बिट्रल अवार्ड की तरह अंडर सेक्शन 31 ट्रीट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपने क्लॉज वहाँ पे मीडिएशन क्या डाल दिया तो वो प्राइवेट मीडिएशन मानी जाएगी, क्योंकि आपने एड हॉक स्ट्रक्चर्स तो भी दे नहीं है, उसकी लीगल कोई सैंक्टिटी नहीं है। तो इफ पार्टीज हैव ऑप्टेड फॉर प्राइवेट मीडिएशन इन परसुएंस ऑफ अ मीडिएशन क्लॉज और अदरवाइज बाय, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मीडिएशन का क्लॉज डालो, बट then settlement agreements are not treated as arbitral awards, thus they are enforced as mere contract between the parties। now अब आपने उसको क्या किया, आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट की तरह कर लिया, फिर लिटिगेशन शुरू हो जाएगी। सिंगापुर हैज रियलाइज्ड दिस मिस्टेक, व्हाट दे आर सेइंग कि हम एक काम करते हैं, हम प्राइवेट मीडिएशन को और मीडिएशन कंसिलिएशन इनको डिफरेंस से मिटा देते हैं। फर्क देखो, अगर हम ये फर्क भी मिटा देना, एटलीस्ट जो सेटलमेंट हो रही है मीडिएशन के थ्रू वो कंसिलिएशन के अवार्ड की तरह या आर्बिट्रेशन के अवार्ड की तरह ट्रीट होने लग जाएंगी। बहुत बड़ा चंक जो मैटर्स का है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, मैटर्स ज्यादा रेफर करे जाएंगे मीडिएशन के लिए। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम कोई भी पार्टी या कोई भी लॉयर उस प्रोसेस के लिए क्यों एडवोकेसी करेगा जिसका अभी हमको इन्फोर्सिबिलिटी नहीं पता। हमको यही ही नहीं पता कि हमने एग्रीमेंट कर लिया, हमने सेटलमेंट भी कर ली, बट उसको इन्फोर्स कैसे कराएं ये अभी किसी को पता ही नहीं है। क्यों प्राइवेट एज अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट होंगे, फिर लिटिगेशन होगी, इससे अच्छा पहले लिटिगेशन में चलो। अब लैंडमार्क जजमेंट आई ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की, रवि अग्रवाल, इन्होंने साफ कहती है कि ऐसा है कि जो प्राइवेट मीडिएशन है, क्या जो वो मीडिएशन है वो हम आर्बिट्रल या कंसिलिएशन के अवार्ड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इन दिस केस द पार्टीज हैज रीच्ड सेटलमेंट एग्रीमेंट बाय अ प्राइवेट मीडिएशन एंड सॉट एनफोर्समेंट अंडर सेक्शन 30, 73 एंड 74। 30 कहता है कि मैटर अगर उसने करा हो, 73 70 वो कंसिलिएशन डिक्री है। कोर्ट ने कहा जी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि only applies to settlement agreements drawn in pursuance of a duly considered conciliation procedure। मतलब अगर तो आपने क्लॉज में कंसिलिएशन डाल दिया तो आपको हो जाएगा, बट अगर आपने क्लॉज में मीडिएशन डाल दिया तो आपका सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। और हम एक तरफ हम लॉज में मीडिएशन और कंसिलिएशन को सिनोनिमसली यूज कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट के टाइम पे हम कह देते हैं कि ये ऑन पार्ट ट्रीट नहीं हो सकती, प्रोसेस डिफरेंट है। इस चक्कर में आप जाओ, ये तो प्राइवेट मीडिएशन ही ट्रीट होगी एज इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्जीक्यूशन डाल देगा। What we have done is like कि हमने एक मौकरी बना के रख दिया है ये लकूना से। Now राम मंदिर की जो केस में मीडिएशन हुआ था, this was a classic example कि courts की intent to send the matter to mediation is very good। At least जो parties थी इस मैटर के अंदर, at least they sat together, they had a word, कुछ tempers cool down हुए, agreed। But यहाँ पे भी मीडिएशन की तीन जो मेन पॉइंटर्स थे वो हमने मिस कर दी। पहला पॉइंट हमने क्या, पहले तो ये नेम, पहले तो हमको ये समझना है कि ये राम मंदिर का जो केस था, इट इज द केस का नेम था मोहम्मद सदीक वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स। इट वाज नथिंग मोर देन अ सिविल सूट। बट हम सबको पता है कि इसको किस तरीके से रिलीजियस रंग दिए गए, किस तरीके से अभी तक अगर मैं अभी बात करूं, मेरे को भी नहीं पता था कि इस केस का नाम मोहम्मद सदीक वर्सेस महंत सुरेश दास था। मैं जब रिसर्च करा तो मेरे को पता लगा अच्छा ये नाम क्यों, क्योंकि इसको हमने फेमस ही राम मंदिर डिस्प्यूट के नाम से कर दिया। रेफरेंस कर दी कि 8 मार्च 2019 को पैनल में इन्होंने कहा कि जस्टिस कफीउल्ला साहब होंगे, श्री रविशंकर होंगे और श्री राम पांचों के वेन्यू रख दिए इन्होंने फैजाबाद। अब पहली बात, mediation to be any mediation is successful only when the mediators are treated or when the mediators are neutral। इन्होंने श्री रविशंकर को मीडिएशन पैनल में डाल दिया, उनकी स्टेटेड पोजीशन हमको पहले से ही पता थी। ही ओपनली एडमिटेड कि वहां पे तो जी मंदिर ही बनना चाहिए, वहां पे ये जमीन जो है ये तो हिंदुओं की है एंड ऑल दैट। हमने अब क्या किया, हमने एक ऐसी चीज कर दी कि हमने अब मीडिएशन के लिए रेफर कर दिया। मीडिएटर पे भरोसा ही नहीं है, क्यों होगी मीडिएशन? मीडिएटर की स्टेटेड पोजीशन पहले ही क्लियर थी इसके अंदर, हमने 3 में से 1 की तो क्लियर ही होगी। एटलीस्ट उनको इस मैटर में रिक्यूज कर देना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए था कि देखो जी मेरी स्टेटेड पोजीशन पहले ही क्लियर है, मीडिएटर मेरे पार्टी मेरे पे क्यों मेरे को मीडिएटर मानने की मेरी न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन उठे जा रही है। क्वेश्चन मीडिएशन जब हो रही थी तब भी उठाएंगे,
रिक्यूज उन्होंने किया नहीं मीडिएशन सेटलमेंट के, वैसी चांस लिमिटेड थे इसके अंदर, क्योंकि मैटर इतना हाई प्रोफाइल, मैटर इतना कॉम्प्लेक्स था। बचा कुचा काम ये हो गया कि मीडिएटर ऐसा अपॉइंट कर दिया जिसकी स्टेटेड पोजीशन पहले पता थी, मीडिएशन फेल हो गई। सेकंड जो रीजन था इसके फेल होने का, अब अगर आप जो मुस्लिम लॉ साइड के लॉयर है राजीव धवन, उनका इंटरव्यू मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि मैटर ये सिविल नेचर का था इन दोनों पार्टीज के बीच, बट जब मीडिएशन के अंदर हर सेंट्री पार्टी को उसके अंदर सुना जा रहा था जिसको कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं है, और तो और एक कहना चाहिए एक एमपी साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि 500 जगह पे ऐसा डिस्प्यूट है, 500 जगह पे हमको मस्जिद गिरा के मंदिर बना देने चाहिए। अब उन पार्टीज को भी सुना जा रहा है इन मीडिएशन। अब ऐसी पार्टीज को हम सुनेंगे, पता है आपको मैटर इतना हाई प्रोफाइल है, पता है कि मैटर इतना रिलीजियसली चैलेंज है, पता है कि टेम्परेचर इतने हाई हैं, अब उस पार्टी को सुन रहे, वो मीडिएशन में जाके यही कह रहा है कि जी ये 500 जगह पे ऐसा है, ये तो रिजॉल्व हो ऐसे हो करवा ही लेंगे, हमने तो 500 जगह हो करवा। तो सिविल मैटर था, हमने सिविल इसको हमने मीडिएशन में इसी बेस पे भेजा था कि ये मैटर सिविल है, हमने ऐसी पार्टीज को वहां पे बुला लिए जो और आके मीडिएशन सेटलमेंट के अंदर भड़काई जा रही है। और जो थर्ड पॉइंट था कि किसी भी मीडिएशन, सक्सेसफुल मीडिएशन का जो पहला रूल, थंब रूल है, वो है कि जो मैटर्स अंदर डिस्कशन करी जा रही है दैट वुड बी कॉन्फिडेंशियल। बट एज यू कैन वी कैन ऑल सी, हुआ ये था कि 2019 में मीडिया न्यूज चैनल्स पे खबर पहले आ जाती थी कि जी आज मुस्लिम पक्ष ने ये प्रस्ताव रखा, आज हिंदू पक्ष ने प्रस्ताव मांगने से मना कर दिया। कहाँ रही कॉन्फिडेंशियलिटी? क्यों भरोसा करा, क्यों पार्टी साहब की इस पे भरोसा करा? हम लीकेजेस कर रहे थे इसके अंदर। ये क्लासिक एग्जांपल है, इवन तो मैं अभी भी मानता हूँ कि रेफरेंस टू मीडिएशन वाज अ रियली नाइस स्टेप, एटलीस्ट उन्होंने पार्टीज को बिठाया टेबल के ऊपर। बट अगर हम ये तीन चीजें ना होती, एक तो ये मीडिएटर साहब को हम कहते हैं कि आप रिक्यूज करो, आपकी स्टेटेड पोजीशन है, एक हम ये सिर्फ पार्टीज जो मेन पार्टीज थी टू द लिटिगेशन हम उनको सुनते हैं, क्योंकि अगर उनमें ही मैटर रिजॉल्व हो जाता तो बाकी जो मिसलेनियस पार्टीज थी वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता। मेन पार्टीज ने अगर मान लिया सेटलमेंट होगी कम से कम, वो तो हम निपटा देते। और थर्ड था कि कॉन्फिडेंशियल रखा ही नहीं गया। हमने सारी, राजीव धवन साहब ने कहा कि मैं तो जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि जो मीडिएशन में उनमें पार्टीज जानी चाहिए, बट कहते वहां से लॉयर्स तो आए या ऐसे सेंट्री पार्टीज को भी हमने बुला लिया, वो मीडिएशन अगर कुछ हो भी रही होती थी वहां की कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते थे, मीडिएशन हो ही नहीं पाया। तो ये क्लासिक एग्जांपल है कि हमारा इंटेंट, कोर्ट का इंटेंट, एज लॉ पॉलिसी मेकर्स का इंटेंट तो बहुत सही है मीडिएशन को लेके, बट अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। तो टिल द टाइम हम ये चैलेंज रिजॉल्व नहीं करते, मीडिएशन एज अ कंसेप्ट इज ब्यूटीफुल, बट ये चैलेंजेस जब तक रहेंगे हम शायद उसको इतना प्रॉपर्ली इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज या सिंगापुर कर पा रहे। अब there are some suggestions which I am providing, which we are providing to improve mediation. The pre-litigation mediation should be made compulsory in civil disputes and mandatory should be made mandatory. उसमें ये ना हो कि mandatory का हम वही हाल कर दे जो हमने सेक्शन 12A का कर रखा है। Regular training programs of mediation in addition to the 40 hours training बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम 40 आवर्स की ट्रेनिंग देंगे वो सफिशिएंट नहीं है। लॉ हर दिन चेंज हो रहा है, कमर्शियल मैटर्स में चेंज हो रही है, टैक्स लॉस में चेंज हो रही है, हमको मीडिएशन हर पॉइंट पे चाहिए। 40 आवर्स की ट्रेनिंग सफिशिएंटली वो है ही नहीं है किसी भी लिहाज से। रेगुलर ट्रेनिंग चाहिए हमको, हर महीने ट्रेनिंग का सेशन हो फॉर द मीडिएटर्स। जजेस जो 40 आवर्स की एमसीपीसी की ट्रेनिंग ले चुके हैं उनको आप कहो कि आप दिन में, हफ्ते में, महीने में एक दिन आप मीडिएशन के लिए जाए, आपको 40 आवर्स की ट्रेनिंग मिलेगी, आपका मैंडेट हो चुका है, आप जाओ वहाँ पे मीडिएशन करो। जज साहब की मीडिएशन करवाने में और एक लॉयर और एक्सपर्ट की मीडिएशन करवाने में वो है तो जज ही है ना, उनकी वो जो पार्ट उस मैटर से कनेक्टेड नहीं है, देयर आर चांसेस कि वो जो मैटर्स है एमिकेबली ज्यादा रिजॉल्व कर पाए एज कंपेयर टू द मीडिएटर्स। प्रमोशन ऑफ मीडिएशन, वी नीड टू प्रमोट मीडिएशन। हमने आज की डेट पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लॉज एक नॉन लॉ बंदे को भी पता है क्योंकि हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, रेगुलरली एड्स, हर रेडियो पे हर बार ऐड आ रही थी, जागो ग्राहक जागो। ऐसे ही हमको मीडिएशन को प्रमोट करना पड़ेगा एटलीस्ट, अगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं पर उसके बराबर की ही ये चीज है कि अगर हम इसकी प्रमोशन ढंग से करें, मैटर्स कोर्ट में ना आ जाए, पेंडेंसी कम होती रहे, टाइम बचता रहे। अगर लॉ हम हमेशा से पढ़ते आए कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, क्यों हमने प्रमोट ही नहीं करे बाकी एडीआर के मैकेनिज्म। मीडिएशन सेंटर्स टू टेक अप ऑनलाइन मीडिएशन, हाँ ये सब पहले हमको बहुत चैलेंज रिजॉल्व कर ले, कोविड का टाइम है तो मीडिएशन तो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, वी नीड टू जस्ट डू, जैसे अभी हम सेशन ले रहे हैं ऐसे गूगल मीट पे, जूम पे, कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मीडिएशन कर सकते हैं। Establishment, we need to establish the mediation council or the line of the arbitration council. जब तक हम मीडिएशन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फॉर्मल नहीं करते
और ये सब हाई कोर्ट पे छोड़ देते हैं कि वो रूल्स बनाता रहे, या हम इस पे छोड़ देते हैं कि जिस लेजिस्लेशन के अंदर दे रखा है, हमने एडहॉक और प्राइवेट मीडिएशन को लीगली रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा, तो कैसे सक्सेसफुल हो गया? आर्बिट्रेशन क्यों सक्सेसफुल है? वहां पे एक तो स्ट्रक्चर है, लॉ है, उन्होंने एक आर्बिट्रेशन काउंसिल भी कर दी, पार्टीज को पता है कि हमको इनको अप्रोच करना है, एंड इंडक्शन ऑफ मोर वुमेन एंड एक्सपर्ट मीडिएटर्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर हमको वुमेन मीडिएटर्स आर अ मस्ट. देयर आर सम डिटेल्स, देयर आर सम फैक्ट्स जो विमेन, स्पेशली विमेन, सिर्फ विमेन से ही डिस्कस करके खुश होती है, विमेन मीडिएटर्स होंगी, इट वुड प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एंड वो जो मैटर्स रिजॉल्व कर पाती हैं एज कम्पेयर टू द मेल मैटर्स, स्पेशली इन केस ऑफ this matrimonial dispute, that is far more efficient as compared to what you say, a man mediator or an husband. So this was the session. I hope that at least kuch clarity आई होगी इस topic पे, and we are ready to take any questions at this. Although we have passed, I mean, it was supposed to, but I was aware that it will go beyond the stipulated time. I would quickly want, if there is one question, sir, in the chat box, if you want to take that. That is, it says, if you can question answer. JAG litigation is You would like to take this? there's no term like JAG I was litigation. also wondering, Satvik, if you can unmute and let us know what you are trying to. So they are just year one students. I don't know, must be read something somewhere. Yeah, if you can elaborate a little on it. Yes. Satvik? Ma'am, actually, my question is, what is the difference between civil litigation that, like you have Okay. said, and the litigation that happened between the main army families and Okay, JAG means Judge and Advocate General Yes. Branch in Army, yes, right? yes. So he's asking, is there any difference between the cases which we have in civil courts and in army courts? So there is a clear difference. Like in army courts का जो process है वो थोड़ा सा informal होता है as compared to a civil litigation. वहाँ के जो जितने भी आप lawyers या जितने भी आप concerned authorities होते हैं, they are all army persons. वहाँ का law ही different है as compared to a civil litigation. So there is a clear cut demarcation. I haven't been there in JAG litigation, but I know this कि वहाँ पे the litigation it's completely different from what is being practiced in the civil courts. But I think somehow after getting suspended or after getting terminated from their post, they can anyhow can move towards the civil courts. They can move Yeah. towards the civil courts, but what is the question कि JAG में जो suspension और उसकी litigation होती है, that is completely different from what Right. is being practiced in the civil courts. उसके बाद तो there is appellate, वहाँ भी appellate के boards होते हैं. आप सीधा civil litigation में उस पे भी नहीं आ सकते. You have to first go through that process. जो पूरा process उसके अंदर army laws के अंदर दे रखे हैं, वो process अगर आप पूरा fulfill नहीं करते, तब तक आप civil litigation की तरफ वैसे में नहीं enter हो सकते. Absolutely right. Absolutely correct. Any other question? Any other question? Students, you can simply unmute yourself and ask if you have any questions. To save time, let's avoid typing and you can just ask your question. Achha. Okay, so probably they cannot. Nahi, sir, they'll take time. I probably would connect with you in case they have a question. I'll drop in case I will be able to. Okay, so there are instructions coming from Vikram sir. Even I was not aware. So if you raise hand, and probably Vikram sir will allow you to ask question. So I am just waiting if somebody. Meanwhile, I just want to till the time if there is any hand raised before we close the webinar. I would really the way you both have taken up, talking about conceptual then challenges. It was really wonderful. I mean, we all were being a faculty and reading arbitration provisions on and off so frequently. I take up commercial subjects and we do refer and we emphasize on the importance of ADR, the whole system. But the way you have taken up, even I was referring to a few notes here and there. So one thing that I would
I really appreciate. When I was Tanvi, in fact, I was asking Yes. something and then was some glitch. Yeah, there was, I was not Yes. able to hear So you that was properly. answered very well by Advocate Gurkaran when he said that Okay. mandatory, probably because there is no awareness. Court want to redirect people to the mandatory arbitration. At least you go Exactly. see what is available to you, because people are not Exactly. aware. अभी आपने बहुत अच्छे से कहा mediation और meditation. They are actually not very clear that these two are different words. So that was very self, because it's not spread. Although mediation ADR is very well, it's part of our system. If you look at the local panchayat and local governance system, it was very much from there. We are adopting it. We have adopted it more, and we're talking more about it when it's come from global. It's ye hamara thoda sa, we're looking towards West always. So, but it is very much, it's deep rooted in our system. So I don't know why it's not being spread and massively given importance. Where everybody is doing, why we are failing here, I really fail to understand that. But time will come. We'll certainly have more. Basically, litigants की psychology अभी भी वही है. जब तक हम वो change नहीं करते और lawyers का participate नहीं करवाते, नहीं sir, ये fail होगा. I realize we are failing in our duties. We as faculty, probably when we are making them, teaching them professional ethics, we are missing on the values of ethics. That the first is that you have to uphold the interest of the litigant. So when you think that way, you will obviously redirect them to different options which are available. So we are failing. We would rather professional ethics yet to come. I'll see if we can do a bit of it. I think no question is coming. Vikram sir, if we can. So probably allow me if I can mail you the questions in case we are unable That to. would be perfect. That's not an issue. Yeah. So thank you so very much. I mean, I really want to see that mediation gets codified soon, and we all credit will certainly go to, and we'll hear you again then. So Thank sooner you we'll so have much. you Thank you so again much. Thank with you. all. It was a wonderful It was a opportunity wonderful for both experience of for us us. as well. Right. So thank you so very much. I, on behalf of the ILM school, our dean ma'am, who couldn't make it here because she was a little unwell, and the entire faculty, the staff, everybody who have been here, and especially students, I always believe that it is off today and they still managed to, who all have joined us. It's really been great. Probably it shows the interest that they have to learn. So, and maybe a fewer in number, but understanding that it is on a holiday and then, half of them will be sleeping till late. So it is yet good. So thank you so very much. Thank you. And wish you all the Thank you, best. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you, Tanvi. Thank you so much for being with us. Thank you so much. It was Thank you.